Difference between speed and velocity. Speed is distance covered per unit time. डिस्टेंस हमें पता है, स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड displacement covered per unit time is velocity. Displacement upon time. As distance is scalar, therefore speed is also a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. What do you mean by uniform speed? When an object covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be at uniform speed. Similarly, uniform velocity equal displacements in equal intervals of time. Now what is variable speed? When an object covers equal distance in unequal intervals of time or unequal distance in equal intervals of time, then the object is said to be at variable speed, moving with variable speed. Equal distance in unequal इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब चाहे ये टाइम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो तब भी एप्लीकेबल होगा इन सभी में. ये जो टाइम है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी है, तो इन सब में स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है. इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time. वेलोसिटी में क्या होगा? वेरिएबल वेलोसिटी in this either speed is unequal or direction of motion is unequal or both changes with time, then it is said to be at variable velocity.
speed or direction. Changes or both changes. Fifth point is average speed. When an object is moving with variable speed, then average speed is given by, it is denoted by denoted by v, total distance upon total time. It is always positive, and of course it's a non-uniform motion. Now average velocity, it is total displacement average is denoted by V bar, total displacement upon total time. It can be positive or negative. अब इसमें हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है डिफरेंट स्पीड से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड. Therefore, V is equals to d1 plus d2 plus d3 and so on, by, from the formula it is t1 plus t2 plus t3 and so on. Now different speeds are given to us, so we will write, we know that speed is equal to distance upon time, therefore time is equals to distance upon velocity. It is therefore V is equals to d1 plus d2 and so on upon d1 by v1 plus d2 by v2. अब इसी के ही पहले हम स्पेशल केसेस देख लेते हैं. फर्स्ट, अगर इसमें आपको कई सिचुएशंस न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगी, जैसे अगर एक पहली सिचुएशन तो ये हो गई, इसी के ही स्पेशल केसेस और क्या हो सकते हैं कि अगर इसमें डिस्टेंस सेम हो जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज, लेट अस सपोज फर्स्ट है स्पेशल केस, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d गिवन है और स्पीड्स आर डिफरेंट. ठीक है, v1 and v2 speeds are given. Therefore, put in the value d plus d is 2d. यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, d upon v1 plus d upon v2. Take d common. It is 1 upon v1 plus 1 upon v2. And we are remain with v is equals to 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. एक फॉर्मूला ये वाला हो गया एवरेज स्पीड का. और फर्दर हम आगे कर सकते हैं इसके साथ में ही और फॉर्मूलेस अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन गिवन इन द न्यूमेरिकल. एवरेज वेलोसिटी वी हैव स्टडीड फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म रेट. वो एवरेज वेलोसिटी थी for non-uniform net displacement divided by
ये हम पढ़ चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज it can be positive or negative. So net displacement, we can also write net displacement divided by total time. Let us suppose position x1 है t1 टाइम पे और पोजीशन x2 है t2 टाइम पे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म मोशन. When an object is moving at a continuous rate, then average velocity is given by the formula initial velocity plus final velocity by 2. That is, it is the average of two velocities. Now another point is instantaneous speed. Speed of an object at an instant, at the particular instant of a time, is known as instantaneous speed, and it is given by v is equal to limit del t tends to 0 equal to del x by del t. This is for an instant where delta t is tends to 0. It's very small. For very small time we have to calculate speed. Then it is given by this formula, and it is equal to derivative of x divided by derivative of time. Similarly, instantaneous velocity is velocity at a particular instant of time, given by limit delta t tends to 0 del x by del t. That is a small change in displacement divided by small change in time. That time is very small, given by limit delta t tends to 0 equal to dx by dt. इसमें वेलोसिटी में एक नोट है that for uniform motion, instantaneous velocity is equal to uniform velocity और is equal to average velocity. यूनिफॉर्म मोशन में तीनों वेलोसिटीज इक्वल होंगी, जब क्योंकि उस समय वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है. इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म मोशन instantaneous velocity is equal to average as v is constant.